BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. नशा घरों को तोड़ता है और नशा मुक्ति घरों को जोड़ता है। BSS रिदम पॉडकास्ट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आचार्य एंकर सिद्धार्थ जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ इस इम्पोर्टेंट रादर स्पेशल सेगमेंट में which is based on Nasha Mukti. We are delighted to have Dr. Sanjay Shrivastava sir with us. He is the medical manager for Global Fund under HIV AIDS program. He is also the founder of Disha De-Addiction Center. He has worked with esteemed organizations such as UNICEF and WHO. And we are delighted to have you, sir. My first question, मेरा पहला सवाल आपके लिए, एडिक्शन को किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं? सिद्धार्थ जी, थैंक यू सो मच। एडिक्शन को यूज़ तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उसका डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई भी पदार्थ जो हमको, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे सामाजिक ढांचे को और हमारी आर्थिक परिस्थितियों को नुकसान पहुंचाए, ऐसे पदार्थ का सेवन करना और उसकी लत में पड़ जाना एडिक्शन है। अगर ये 5 चीज़ें नहीं हो रही है तो वो एडिक्शन नहीं है। तो आप उठा के इसको हम मेडिकल की भाषा में सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कहते हैं या सब्सटेंस अब्यूज़ कहते हैं, यानी यूज़ भी है और अब्यूज़ भी। जब हम उन पदार्थों को मिसयूज़ करने लग जाते हैं तो वी कॉल इट अब्यूज़। सो सब्सटेंस अब्यूज़ इज़ द राइट वर्ड वी शुड यूज़। जनरली एडिक्शन। ओके, और सर क्योंकि आप इतने समय से इस फील्ड में काम करते आ रहे हैं, सो व्हाट डू यू थिंक इज द इम्पैक्ट ऑफ एडिक्शन? इम्पैक्ट तो मैंने बताया आपको कि 5 आयाम हमारे प्रभावित होते हैं इससे। कोई भी बीमारी होती है तो या तो शरीर को प्रभावित करती है या बुद्धि को प्रभावित करती है। कुछ पल के लिए जब तक हम बीमार रहते हैं तो मन भी विचलित होता है, लेकिन एडिक्शन का इम्पैक्ट 5 आयामों पे बॉडी, माइंड, your brain, your finances, your social structure and the most important your spiritual existence. हमारा आध्यात्मिक, हमारा खुद के ऊपर भरोसा टूट जाता है, ऊपर से वाले से हमारा नाता टूट जाता है। हमारा खुद के प्रति जो एस्टीम है, जो हमारे प्रति मन में खुद के लिए ही ग्लानि भर जाती है, हम खुद को ही स्टिग्मेटाइज करने लग जाते हैं। और बाहर की दुनिया में हम देखें तो अगर हम अल्कोहल को ही लेते हैं तो दिस इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ अननेचुरल डेथ। बहुत बड़ा कारण है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का, बहुत बड़ा कारण है ये घरेलू हिंसाओं का, और डिप्रेशन। अल्कोहल इज़ अ बिग डिप्रेसेंट। बहुत सारे लोग बाग अल्कोहल के कारण से डिप्रेशन में चले जाते हैं। और अल्कोहल आज किस प्रकार से सोशली एक्सेप्टेड है, और अल्कोहल के बाद व्यक्ति रुकता नहीं है, उसको आयाम मिलता है तो ब्राउन शुगर में भी चला जा सकता है, कैनबिस की तरफ भी चला जा सकता है। तो इम्पैक्ट इज़ सो मच। एंड उसके मुकाबले में जो इंटरवेंशंस है बहुत कम है। सोशली एक्सेप्टेड, सोशली प्रमोट भी करते हैं लोग। पीयर प्रेशर, यंगस्टर्स की आप बात कर रहे हैं, हम लोग बात करें तो जैसे ही बच्चा 18 के नज़दीक पहुंचता है, उसका एक अपना दुनिया होता है, उसका अपना सर्कल होता है दोस्तों का, और वो उसमें से कोई भी नशा करने वाला ग्रुप मिल गया उसको, तो उसके ऊपर इमेंस प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, पाउच लेने का, सिगरेट लेने का, एंड दैट दीज आर द गेटवेज। यहीं से वो नशे के लिए अंदर उतर। सर ये तो हो गई प्रॉब्लम की बात। Now if I talk about solution, or in medical as we say treatment, correct. So like I would ask you to be very honest कि क्या सही में ये possibility कि हम किसी को देखते हैं जो नशे में, क्या ये तो गया, क्या वहाँ से रिवाइव होना, क्या वहाँ से वापस आना पॉसिबल है? how is the treatment process like? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि एक बार एडिक्ट जो बन जाते हैं या उनके परिवार वाले, उनकी मनोस्थिति ऐसी होती है कि वो विश्वास नहीं करते कि ये बीमारी कभी निकल पाएगी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डिपेंडेंट बना देती है एक मरीज़ को, और वो अंदर से होपलेस हो जाता है। तो आप देखेंगे एडिक्ट का सपोर्ट नहीं मिलता। सभी बीमारी में, डायबिटीज़ को ले लीजिए, कार्डिक प्रॉब्लम्स को ले लीजिए, एनी डिसीज यू टॉक, देयर इज यू गेट सपोर्ट फ्रॉम पेशेंट वांट्स ट्रीटमेंट, बट इन एडिक्शन बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंस और विड्रॉल्स दे आर नॉट रेडी टू सपोर्ट। And when they are not ready to support, then it creates a big problem for the therapist, those who are the doctors, counselors. They face lot of difficulty in treating an addict. और इसी कारण से इस आयाम पे काम करने वाले ह्यूमन रिसोर्स की बहुत कमी है,
क्योंकि ऐसे मुद्दे पे काम करना जहाँ पे लोग बाग सपोर्ट ही ना करें आपका, तो बहुत कम संस्थाएं मिलेंगी, बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो इस पे काम करना चाहिए। इंस्टीट्यूट्स बहुत कम हैं। और मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि एडिक्शन कैन बी रिकवर्ड, लेकिन इंटरवेंशंस होने चाहिए। इट शुड बी ए होलिस्टिक अप्रोच। इफ़ यू ओनली डिपेंड ऑन मेडिसिन्स, इफ़ यू ओनली डिपेंड ऑन सम काउंसलिंग और साइकोथेरेपी, then half thing is done. There interventions should be planned where you have some intervention to work with your mind, and where their yoga is important, their meditation is important. At the interventions which work at the level of mind is very important. Then family support, social support is very important. And in addiction, you see that patient is not only the sufferer, whole family is the sufferer. Yes. So you can call that family is deceased. Right. So intervention should be designed so that family can be treated. पूरे परिवार को इस तकलीफ का सामना करना पड़ता है. Correct. So generally you see that patient is okay with addiction. They do not want to leave it. वो एक fantasy world में है. Correct. But a real suffering is with the family. So we should see that this is a disease of the family where an addict is living. Right. So we should broaden our perspective that instead of treating only an addict, we should treat the whole family. And then when involvement of each and every member of the family and the close family members should be involved, and it is a chronic approach. It is a complex intervention. The treatment process should continue for at least a year or so. Then only you will get the results. And I personally have so many patients, and even our one center is running only by patients. Okay. That is, we call it as therapeutic community, and they are managing wonderfully the center, and they are, once they had been into addiction by themselves, creating big problem for their family or for themselves, now they are managing the center and treating others. So this is very much possible. So intervention important and therapies are important for Correct. not just the patient but family के लिए. So addict should be hopeful that this can recover, but a team approach is important. Okay. And so क्योंकि हम भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में बैठे हैं जहाँ पे you get to see around 5,000 young minds. Correct. The social work department and rest of the students have been working for this cause actively. And अगर हम इस तरह से पूरे youth के बारे में बात करें, जो भी youngsters हैं, maybe in the city, in the state, in the country, what do you think, or what would be your message? How can the youngsters, how can the institutions, how can the students contribute to this cause? And the biggest contribution a youngster can do is that just by saying no to addiction. And this is not only sufficient by saying this thing, but these youngsters have so much energy within themselves. They want to experiment. Yeah. They want to try something new. They can take risk, and they enjoy doing this thing. And then there are some friends, those who are into addiction, if they are. So youngsters can play a very important role just by not getting into addiction. Also, they can contribute to their family members. If somebody is there in the family who is into addiction, they should try the best to take them out of it, because if somebody is there in the family who is taking addiction, then he is going to spoil everything. And in the community or in the society or in the college also, they can do wonders by involving themselves in working towards this whole cause. And they can take as a mission of their life that I will not get into addiction. I will get into an addiction which is very positive. Right. There are so many things which are addictive in our society, which are good for ourselves, like sports. They can be addicted towards some sports or some arts or some other thing, or into social service. Passion or hobby. Correct. That's what. They can make that I enjoy this thing. I can feel the thrill into it, and they can take it as addiction and get addicted into something which is very positive for themselves, for their health, for their family, and for the society. So if they do this thing, then this is just like a substitution. Very easy substitution, and if they are addicted to that thing, then they are not going into something bad. Absolutely. I think इस पूरे जवाब में से जो पहली लाइन थी, उसी में ये मैसेज क्लियर था. Yes. He say no to drugs, and that's Correct. what we ask you to do the same. Share this video with someone you think who needs to see this.
And thank you so much, Thank Dr. you. Sanjay ji, Thank for you being so there. much. Thank it you was for a pleasure inviting me to to have talk. you on BSS Rhythm podcast. Till then, stay tuned to BSS Rhythm and remember, say no to drugs. Thank you. Thank you. BSS Rhythm. BSS Rhythm. BSS Rhythm.